Guruji. Anantam Shukrana Guru Maharaj for a beautiful, blissful, divine satsang. With Guruji's divine grace, we are reading the Holy Shivpuran at Guruji Ka Ashram, Somerset every Monday after the Mantra Jap. So if you're interested in participating in the reading, kindly contact Seema Auntie, me or Rashmi Auntie. Last week we read chapter 36 and 37 of Rudra Samhita 2. In this we read that Lord Vishnu, along with other devas, and Virabhadra, along with his army of Ganas, came to the sacrificial platform. There was a great fight that ensued between devas and Ganas. Now, in this battle, the devas were defeated and they fled to heaven. And afterwards, only a handful of devas, which included Indra and the guardians of the quarters, they remained there and they went up to Brahaspati to inquire how could they be victorious over Ganas. Now Brahaspati meditated upon Shiva and told them that what Vishnu had professed is going to happen, and that the Ganas are going to destroy the sacrifice and there is no way that this could be prevented. Hearing all this, Vishnu and all the other devas, they could not think of anything. Meanwhile, Virabhadra, along with his Ganas, he surrounded the devas and he hit them with a lot of sharp arrows, and all the devas got wounded and they fled to heaven, including Indra and the guardians of the quarters. Now once they left, Virabhadra approached the sacrificial chamber along with the Ganas, and as he did that, the sages who were performing the sacrifice saw him and they bowed down in front of Vishnu and they prayed to Vishnu to protect them and to protect the sacrifice. Vishnu, of course, wanted to be, he was desirous of fighting Virabhadra, and therefore he came out of the sacrificial chamber. In front of Virabhadra, when he came there, Virabhadra was furious, and Virabhadra asked Vishnu that why was he so haughty, why did he go against Shiva, why was he here, why was he the savior of Daksha's sacrifice. To all this, Vishnu smiled and told Virabhadra that he was servant of Shiva and that he was not haughty and not inimical towards Shiva. He also told him that as a lord, Daksha was his devotee and he was subservient to his devotees, and Daksha had requested Vishnu to be there. Now when this happened, and he said that we will eventually fight each other as destined, Virabhadra became humble and said that you and Shiva are like. And he and Vishnu entered into a battle with each other, and of course Vishnu was defeated, and Vishnu, once he was defeated, he along with Brahma and all the other devas, they left to their respective worlds, and Virabhadra in that time was moving towards the sacrificial chamber. There, sacrifice itself turned himself into a deer and wanted to flee away, but Virabhadra caught hold of him and beheaded him. Then he caught hold of Daksha, who was hiding behind the altar, and he wanted to cut his head, but he could not, so he rested his head and threw the head in the fire pit. Also, along with that, with the fury of Virabhadra, all those who were present there got burnt, and Virabhadra, along with his Ganas, was victorious over Daksha and all the others that were present there. So he headed back to Kailasha with the Ganas, and Shiva, of course, knew that Virabhadra has accomplished the task that he was assigned, and he was pleased with Virabhadra and made him the presiding officer of his Ganas, the army of Ganas. Now today we are going to read chapter 38, which is the dialogue between Shiva and Dadicha. Shweta Auntie will be reading in English and Rachna Auntie will be reading in Hindi. Jai Guruji. Jai Guruji, chapter 38, the dialogue between Shiva and Dadika. Suta said, after hearing these words of Brahma, of immeasurable intellect, Narada the Brahmin was surprised, and he lovingly asked him thus. Narada said, please tell me what reason did Vishnu go to the sacrifice of Daksha along with the Devas but leaving off Shiva? For there so much of ignominy
was in the store for him. Does not Vishnu know Shiva, who has the power of dissolution? Why did he fight with Ganas like a foolish, insensible man? O merciful one, this is my great doubt. Please clarify it, O Lord. Narrate the story of Shiva to us and heightens the enthusiasm in our mind. Brahma said, O excellent Brahmin, listen with pleasure to the story of the moon-crested Lord, which dispels our doubts. O sage, formerly Vishnu lost his knowledge by the curse of Dadika. He therefore went to Daksha's sacrifice along with the Devas in order to help Shiva. Narada said, why did the excellent sage Dadika curse Vishnu? What harm was done by Vishnu to Dadika by helping Shiva? Brahma said, there was a king of great splendor named Shiva. He was the friend of Dadika, the sage of very great potentiality. Formerly, a great dispute, well known in the three worlds, took place between Shiva and Dadika in the context of their penance. This caused great disaster. Dadika, a great devotee of Shiva and a Vedic scholar, said, a Brahmin alone is a noble person in the three higher Varnas. There is no doubt. O great sage, on hearing the words of Dadika, the king Shiva, deluded by his pride due to wealth and glory, said thus. Shiva said, a king holds in his body parts of the 8 guardians of the worlds. Hence, a king is the most excellent lord of all Varnas and Ashramas. He is the supreme lord. The Vedas say clearly that the king consists of all devas. Hence, O sage, I am the great deity. Hence, a king is nobler than a Brahmin. Take the example of Syavana. Hence, I am not to be disrespected by you. I am to be honored always. Brahma said, on hearing that opinion of Shiva, O excellent sage, which went contrary to Vedas and Smritis, Shukra became angry. Dadika of great splendor became angry because it affected his prestige. O sage, with his left fist he hit Shiva on his head. Shiva, on being hit, struck Dadika with the thunderbolt. The king of evil mind became angry and roared loudly. Dadika, on being struck by the thunderbolt, remembered Shukra, who was one of his ancestors. Shukra of yogic powers approached the body of Dadika, who was hit by Shiva, and rejoined the broken limbs. After rejoining the organs as before of Dadika, Shukra, a leading devotee of Shiva, the initiator of Mrityanjaya Vidya, said, Shukra said, dear Dadika, after worshipping Shiva, the Lord of everyone, I am going to tell you the highly potential Vedic mantra Mahamrityunjaya. We worship the three-eyed Lord Shiva, the Lord of the three worlds, the father of the three spheres, the Lord of the three ganas. Lord Shiva is the essence, the fragrance of three tattvas, three fires, of everything that is trichostomized, of the three worlds, of the three arms, and of the Trinity. He is the nourisher in all living beings everywhere, in the three gunas, in the creation, in the sense organs, in the devas and the ganas. He is the essence as the fragrance in a flower. He is the Lord of devas. O excellent Brahmin of good rights, he is called the nourisher because it is from him, the supreme Purusha, Shiva, the Prakriti, the different tattvas from Mahat to the different Indriyas, Vishnu, Brahma, the sages, Indra and the Devas derive their nourishment. Worship that immortal deity. Shiva with sacred rites, penance, self-study of the Vedas, yogic practices, meditation, observance of truth, and other means. You will be freed from the noose of Yama. The Lord is the cause of both bondage and salvation. In my opinion, this Mritya Sanjeevani mantra is the most excellent of all. Repeat these mantras regularly, remembering Shiva with devotion. After japa, homa, and recitation of the mantras, observe fast. But you can drink water day and night. If the meditation is conducted in the presence of Shiva, there is no fear of death from anywhere. Naisa and other ritualistic rites shall be observed. Shiva shall be worshipped duly. Shiva, who is favorably disposed to his devotees, shall be propitiated. I shall also mention the observance of meditation. It is after this meditation that the mantra shall be repeated as long as the purpose is realized due to Shiva's power.
I worship the three-eyed Lord Shiva, the conqueror of death, who is accompanied by Parvati, who pours water on his head from the two vessels held in his lotus-like hands by means of the other pair of hands, who was placed on the two hands with the pots on the lap, who usually holds in his hands the Rudraksha garland and a deer, and whose body is rendered cool and wet by the nectar exuding from the moon born on the head. Brahma said, after instructing the excellent sage Dadika thus, and remembering Lord Shiva, "O dear," Shukra returned to his abode. On hearing his words, the great sage Dadika went to the forest for penance, thinking upon Shiva with great pleasure. Going there, he performed penance, repeating the mantra name Mahamrityunjaya in accordance with the rules and remembering Shiva with great pleasure. After repeating the mantra for a long time, he propitiating Shiva with penance, he delighted Shiva, named Mahamrityunjaya, the conqueror of great death. A great sage, Shiva, who was favorably disposed towards his devotees, became delighted by that japa and appeared before him lovingly. On seeing his Lord Shiva, the great sage was highly pleased. After bowing to him with devotion and in accordance with the rules, he eulogized him with palms joined in reverence. O dear one, O sage, Shiva told the son of Syavana, Dadika, please tell me what boon you require. On hearing the words of Shiva, Dadika, the most excellent devotee, spoke to Shiva, who was favorably disposed to his devotees with palms joined in reverence and a formal salutation. Dadika said, O great Lord, Lord of Devas, please give me three boons, viz. Adamantine bones, impossibility of being killed, and absence of distress. Brahma said, on hearing the words mentioned by him, the delightful great Lord gave Dadika the three boons, saying, so be it. After securing the three boons from Shiva, the great sage, who strictly followed the Vedic path, was delighted and went immediately to Shiva's abode. Having secured indestructibility, adamantine bones, and absence of distress from Shiva, he kicked the king on the head with the root of his foot. Shiva, the king who was haughty by the favor of Vishnu, became angry and hit Dadika on his chest with his thunderbolt. The thunderbolt was incarpented to destroy Dadika, the noble soul, thanks to the power of Lord Shiva. The son of the creator, Shiva, was greatly surprised. On thus seeing the indestructibility, absence of distress, and adamantine bones of Dadika, the great sage Shiva, the son of the creator, became surprised at heart. Defeated thus by Dadika, who was the server of Mrityunjaya, and who resorted to Shiva, Shiva went to the forest immediately and propitiated Vishnu, the younger brother of Indra. The Lord Vishnu, satisfied with his worship, revealed himself to him in the divine form of the Garuda banner deity. On seeing the Lord with his divine vision, he bowed and eulogized him with the pleasing words. After worshipping and eulogizing the invincible Lord, lauded by Indra and others, he devoutly bowed down his head and submitted thus to him. The king said, O holy Lord, formerly I had a humble friend, a certain Brahmin renowned as Dadika, who knew all virtuous acts. He cannot be killed by anyone at any time due to the power of Shiva. He got this boon after propitiating Shiva, the conqueror of death, who is free from sickness. In the open assembly, that Dadika of great penance contemptuously kicked me with his left leg on my head. O Vishnu, he told me haughtily, I am not afraid of anybody. Having obtained favors from Mrityunjaya, he is incomparably haughty. Brahma said, on coming to know of the indestructibility of Dadika of noble soul, Vishnu thought upon unrivaled power of Lord Shiva. Having thus remembered Shiva, Vishnu told Shiva, the son of Brahma, immediately, O noble king, Brahmins need not be afraid of anything even a bit. O king, especially the devotee of Shiva, have no fear at all. He would curse me along with the devas and trouble me. O noble king, my destruction will also take place from the leader of Ganas at Daksha's sacrifice due to his curse. Of course, I'll be rising up again. O leader of kings, the completion of the sacrifice will not take place. Of course, O king, I shall strive for your victory over Dadika. On hearing the words of Vishnu, the king Shiva said, so be it. He remained there alone, eager to achieve his desire. This concludes the reading of chapter 38. Rachna Auntie will read it Hindi now. Thank you. Jai Guruji.
आपको कारण बताते हुए दधीची और शिव के विवाद का इतिहास, मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीची की अवध्यता तथा श्री हरि का शिव को दधीची की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। सूजी कहते हैं, महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्र गणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधे, मेरे मन में यह बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा शिव की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीची मुनि ने शाप दे दिया था, जिससे उस समय वे इस बातों को भूल गए थे और वे दूसरे देवताओं के साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीची शिव नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए हैं। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीची के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से शिव और दधीची में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीची कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीची की बात सुनकर धन वैभव के मत से मोहित हुए राजा शिव ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। शिव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्ववेदमय है। उन्हें इस श्रुति के कथनानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा की श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्यवन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा शिव का यह मत और श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनिश्रेष्ठ दधीची को बहुत क्रोध हुआ। मुने अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीची ने शिव के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाके ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले शिव अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने व्रज से दधीची को काट डाला। उस व्रज से आहत हो भृगुवंशी दधीची पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गवंशधर दधीची ने गिरते हुए शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीची के शरीर को, जिसे शिवन ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीची के अंगों को परभूत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य जी ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दधीची, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्रयंबकम यजामहे, हम भगवान त्रयंबक का यजन यानी कि आराधन करते हैं। त्रयंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडल के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीन तत्वों के आवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाली पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्त भूतों के, त्रिदिव के, त्रिभुज के, त्रित्राभूत, उस सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्याय देवों में, गणों में और उसके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई है। अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ महामुने नारद,
उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए वे ही पुष्टिवर्धन हैं। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यूं है: उर्वा रुक्मिव बंधनाम मृत्योर मुक्षीयम अमृतात्, अर्थात प्रभु, जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद से पथक ना हो जाऊं। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पूर्ण कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान की बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन से बांधे रखता है और एक पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास यादि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान। हस्तांभोज युगस्थ कुंभा युगला दो धृत्य तोयम शिरा सिंचंतम करियो युर्गेन दधातम स्वंगे सकुंभो करो अक्षान मृगशात्मम भुजांगतम मधुरस्थ चंद्रमास्त्रतवा पीयूषर दंतानुभजे सगिरिजम त्रयक्षम चा मृत्युजनम। जो अपने दो कर कमलों में रखे दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा निरंतर झरते हुए अमृत जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो तीन नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का, जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ दधीचि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीचि बड़े प्रेम से शिवजी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर जी की आराधना करके दधीचि ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुनि उस जप से प्रसन्नचित हुए और भक्त वत्सल भगवान शिव दधीचि के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करते हुए मुनीश्वर दधीचि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुने तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने च्यवन कुमार दधीचि से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का ये वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीचि दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से बोले। दधीचि ने कहा, देव देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र की हो जाए, कोई भी मेरा वध ना कर सके, और मैं सर्वत्र अधीन हूँ, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीचि का ये वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे तीनों वर दे दिए। शिवजी ने 3 वर पाकर
वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीची आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा शुभ के स्थान में गए। महादेव जी से अवध्यता, वज्रमय अस्थि और अधीनता पाकर दधीची ने राजेंद्र शुभ के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा शुभ ने भी क्रोध करके दधीची पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु शुभ का चलाया हुआ वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार शिव को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीची की अवध्यता, अधीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार शिव के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना प्रारंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीची से पराजित हो गए थे। शिव की पूजा से गरुणाध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान करी। इस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ध्वज को शिव ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। अरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महात्मा दधीची की अवध्यता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा शिव से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए जो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर शिव बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। अध्याय 38 समाप्त। जय गुरु जी।